Good morning, student. Class 6th, second chapter, whole number. So, the first topic, natural number. The number which start from 1, 2, 3, that is the complete number, are all known as natural number. The number which start from 1, 2, 3, 4 and so on are known as natural number. So what are the natural number? The natural number are the complete number which start from 1 and the complete, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Second, how we will represent these natural number? So the representation of natural number numbers are represented by capital N. So capital N equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on till infinite. The next representation of natural number on number line. So to represent all the natural number, draw a straight line. Start from a number 1. Take the first number, mark any point as 1 and at the unit distance mark this type point and continuously represent 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So representation of natural number on number line, how we will represent? You have to draw a straight line. Take any starting point, represent this point as 1 and from this point at the unit distance take another point, that is second, third, fourth, fifth, sixth and so on and represent the number 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So this is the about the natural number, their representation and the representation of natural number on number line. Now our topic is whole number. So what do you understand by whole number and what is the basic difference between natural number and whole number? So in the given natural number, if one more number, that is starting point 0 is included, then these number will be known as whole number. So next topic is whole number. Whole number. So we discussed just the natural number are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. So these complete number which start from 1 and continuously at unit distance, that is 1, 2, 3 and so on. If these number include the starting point 0, then the number which start from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, these number are known as natural number. So what is the natural number? The natural number are those number which start from 0, 1, 2, 3 and so on. And what are the natural number? Natural number start from 1, 2, 3 and so on. So what is the basic difference between natural number and whole number? If we include 0 as the additional number to the natural number, then the collection of 0, 1, 2, 3 and so on, these number is known as whole number.
So the whole number are these. Now how we will represent these whole number? So whole number are represented by W. So W is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. So the number which start from 0, 1, 2, 3 so on, that is the difference of every next number to its previous number will be 1. So these number are known as whole number and the whole number are represented by W. Now how we will represent these whole number on number line? So draw a number line, mark the starting point as 0 and then take at the unit distance point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. So if the starting point is 0, then after 0, 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6 and 7. So this type, taking a straight line, take starting point as 0 and at the unit distance take points 1, 2, 3 and so on. So this type we can represent the whole number on number line. So whole number are 0, 1, 2, 3 and so on. Representation of whole number are represented by capital W. So W is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the collection of whole number and this is the representation of whole number on a straight line. Now the next topic is operations on whole number. So in this chapter basically we will discuss 4 operations on whole number and the first operation is addition, subtraction, then multiplication and division. So there are basic 4 operations. So next topic is operations on whole number. The basic 4 operations are first addition, second subtraction, third one is multiplication and fourth one is division. So in this chapter basically we discuss 4 operations on whole number: first addition, then subtraction, then multiplication and division. So first how we will add the given whole number and what are the basic properties of addition. So first operations we will discuss, that is addition of whole number and what are the basic properties of whole number. So addition means simply we have to find the sum of given whole number. So addition means addition or sum, the same thing. So let the first number, given number is 3, that is the whole number, and the next number is 5. Then addition of 3 and 5 is equals to 3 plus 5. So this is called sum of 3 plus 5. So 3 plus 5 is what? It is 8. So this type we will add the given whole number. Now what are the basic properties of the whole number? So the first property is addition is closure. So we will discuss about the properties of addition. The first property, whole addition, whole number addition is closure. Closure means if we have given 2 whole number and if we add the 2 given whole number,
then resulted will be also a whole number. For example, if we add first whole number is 0 and the let us suppose second is 1, then 0 plus 1, that is also equals to 1. So addition of two whole number is a whole, also a whole number. So this property is known as addition is closure, because this one belongs to whole number. Similarly, let us suppose one number is 2, another number is 3. 2 is also a whole number and 3 is also a whole number. So 2 plus 3 is equals to 5, and 5 belongs to also W, that is 5 is also whole number. So this addition is a closure. So what do you understand by closure? If we have given two different whole number, and let us suppose if we have to find the sum of given two whole number and sum is also a whole number, then this is known as closure property. One more example, let us suppose one number is 5, another number is 7. 5 is also a whole number, 7 is also whole number. If we add 5 plus 7, then it will be equals to 12. Now what is 12? 12 is also whole number. So if the sum of two whole number is also whole number, then this is called closure property. So whole is a closure. So whole is a closure means if we have given two different whole number and if we find the sum of two different whole number and resulted is also whole number, then this property is known as addition of whole is a closure. Now second, whole number addition is commutative. Whole number addition is commutative means if we have given two whole number, then second property, whole number addition is commutative. Commutative means if we have given two whole number, let us suppose first whole number is A, second is B, then A plus B will be equals to B plus A. What is the basic meaning? अगर मैं फर्स्ट होल नंबर को सेकंड नंबर में ऐड करूं या सेकंड होल नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ ऐड करूं, दोनों का रिजल्ट सेम होगा. So let us suppose one whole number is 2, another is 3. 2 plus 3 will be equals to 3 plus 2. That is 2 plus 3 is 5 and 3 plus 2 is also 5. So whole addition is commutative. So what is commutative? Commutative means if we have given two whole number, first is A, second is B, then A plus B will be always equals to B plus A. अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर देता हूं एडिशन में, फिर भी अगर इनका सम वही रहता है, in that case A plus B if equals to B plus A, then this property is not as whole addition is commutative. Now next property is whole addition is associative. Now what do you understand by associative? For associative, there will be minimum 3 whole number and maximum also 3 whole number. So third property, whole number addition is associative. Associative means we have given 3 whole number. Let us suppose first whole number is A, second is B and third is C. If we have to find the sum of A plus B plus of C, then it will be equals to A plus of B plus C. What is the meaning of this step? अगर मेरे पास में 3 कोई डिफरेंट होल नंबर दे रखा है और मैं पहले किन्हीं फर्स्ट 2 का सम करूं और रिजल्टेड में थर्ड को सम करूं, या फिर मैं पहले सेकंड और थर्ड का सम करूं और सेकंड और थर्ड के सम को किसमें सम करूं, फर्स्ट में. अगर A प्लस B प्लस ऑफ C इज इक्वल्स टू A प्लस ऑफ B प्लस C, then this is known as whole addition is associative. For example, let us suppose A is equals to 2, B is equals to 3 and C is equals to 4. Then it will be equals to 2 plus 3 plus 4. See how? यहाँ क्या किया हमने? There are 3 whole number. First is 2, second is 3, third one is 4.
हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले फर्स्ट टू का सम कर रहे हैं और इनका जो सम आएगा रिजल्टेड उसको किस में सम कर रहे हैं, थर्ड में। सेकंड राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड का सम कर रहे हैं और सेकंड और थर्ड का जो सम आ रहा है उसको फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं। अगर 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4, then this is known as whole addition is associative। नाउ देखते हैं कैसे होता है। 2 + 3 कितना होगा, 5 + 4। राइट हैंड साइड में 2 + 3 + 4 कितना होगा, 7। नाउ 5 + 4 is 9 and right hand side में 2 + 7 is also 9। So a plus b plus c is equals to a plus of b plus c, then whole number addition is associative, or this property is known as whole number addition is associative। That is, अगर हमें 3 नंबर दे रखे हैं और all 3 given numbers are whole number, then फर्स्ट 2 का सम करके मैं थर्ड में ऐड करूं या फिर सेकंड और थर्ड का सम करके और उसको फर्स्ट में ऐड करूं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज होल नंबर एसोसिएटिव। होल नंबर एडिशन इज एसोसिएटिव। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज additive identity element for whole number। The fourth property is additive identity element for whole number। Now about this we discussed in the first chapter also। What is the additive identity element? मीन्स ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम किसी नंबर में ऐड करें और रिजल्टेड नंबर की वैल्यू चेंज ना हो, दैट इज रिजल्टेड नंबर शुड बी सेम। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव गिवन अ नंबर दैट इज 2, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि 2 में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि इसकी वैल्यू वही रहे, दैट इज 0। अगर मैं 2 में 0 ऐड करूं तो रिजल्टेड विल बी 2 एज इट इज। सी हियर, सामने देखें, सेकेंड लेट अस सपोज 3 नंबर है और अगर 3 में मैं 0 ऐड करूं तो रिजल्टेड विल बी इक्वल्स टू ऑलवेज 3। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर अगर 5 है और अगर उसमें मैं 0 ऐड करूं तो रिजल्टेड विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 5। इट मींस दिस नंबर 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर होल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी नंबर फॉर होल नंबर, इसका मतलब अगर 0 को मैं किसी भी दूसरे होल नंबर में ऐड करूं तो उस होल नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इन सच सर्कमस्टांसेस दिस 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। सो नोट कर लीजिए कॉपी में, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट for whole number is 0, that is ZERO। 0 को कैसे लिखते हैं, ZERO और रिप्रेजेंटेशन बाय 0। So 0 is the additive identity element for whole number। So this was about whole number and first operation, additive operation on whole number। Now second operation is subtraction। first operation हमने क्या सीखा, एडिशन। 2 होल नंबर का हम एडिशन कैसे करेंगे और बेसिकली होल नंबर के एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मींस सब्ट्रैक्ट करना। अगर लेट अस सपोज वन होल नंबर इज 2, अनदर होल नंबर इज 3, then subtraction of these two whole number means 2 minus 3। 2 minus 3 will be equals to minus of 1। देखिए अपन ने क्या पढ़ रहे हैं बेटे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर अपन ने डिस्कस किया नेचुरल नंबर, पहला पूरा चैप्टर अपना नेचुरल नंबर के ऊपर था। सेकंड देन नंबर सिस्टम अपन ने पढ़ा था और
सेकंड चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया होल नंबर। अब होल नंबर की अपन ने प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि दो नंबर का अगर हमें एडिशन करना है तो अगर दो गिवन नंबर होल नंबर है तो उनका एडिशन भी एक होल नंबर होता है। लेकिन यहां अगर अपन इन दो नंबर का अगर सबसेक्शन करते हैं 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 which is negative number, negative and not belongs to whole number, so that subtraction of two whole number is not a whole number. Similarly see, अगर मुझे 3 minus 2 निकालना है it will be 1 that belongs to w, that is whole number. But again see, if we have to find the difference of 3 minus 5 then it will be equals to -2 and -2 not belongs to w, so the difference of two whole number is not necessary a whole number. It may be positive and it may be negative. So the next chapter we will discuss if the number is complete and negative, then such number will be known as negative integer. So this one was the about the subsection of a two whole number. नाउ सबसेक्शन की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रैक्शन। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अगर दो होल नंबर हमें दे रखे हैं, जैसा हमने एडिशन में देखा है कि इफ टू गिवन नंबर्स आर होल नंबर, और अगर मैं दो होल नंबर का सम करूं तो रिजल्टेड भी क्या आता है? एक होल नंबर आता है। तो अगर दो होल नंबर का एडिशन भी ए होल नंबर है, इन दैट केस होल नंबर एडिशन इज नोन एज क्लोजर। बट लेट अस सपोज हियर सी, first whole number is 5, second whole number is 3, then 3 plus 5 क्या होगा? 3 plus 5 8 है, और 8 किस में से है? होल नंबर है। लेकिन अगर मैं 3 minus 5 करता हूं तो ये इसकी वैल्यू आती है 2, और 2 बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर में। लेकिन अगर मैं 3 में से 5 को सबट्रैक्ट करूं तो इसका वैल्यू आएगा -2, और -2 इज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। इसका मतलब अगर मेरे को दो होल नंबर दे रखा है और दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो इनका डिफरेंस या तो होल नंबर आएगा या फिर नेगेटिव इंटीजर आएगा। सो होल नंबर सबट्रैक्शन इज नॉट क्लोजर। सो होल नंबर subtraction is not closure. नॉट क्लोजर मीन्स दो होल नंबर का सबसेक्शन जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर हो, वो होल नंबर हो भी सकता है, नहीं तो वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। सो नेक्स्ट नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट पॉजिटिव नंबर आर whole number or natural number, but all the negative complete number are known as integers. So what are the integer? About this in detail we will discuss in next chapter, because this chapter is whole number. Second, commutative property. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हैं हम? होल नंबर सबट्रैक्शन। सो क्या होल नंबर सबट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव? नो। अगर ए कोई होल नंबर है, बी कोई दूसरा होल नंबर है, तो a माइनस बी विल नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। सो होल नंबर subtraction is not commutative
एग्जाम्पल लेके समझते हैं। माना फर्स्ट होल नंबर आपका 5 है, सेकंड होल नंबर आपका 3 है। अगर मैं 5 में से 3 को घटाता हूं तो आपका आंसर आएगा 2, लेकिन अगर मैं 3 में से 5 को घटाता हूं तो आंसर आएगा -2। सो 5 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 5। सो होल नंबर सब्ट्रैक्शन इज नॉट commutative. So this was about whole number subtraction first closure. Closure is also not satisfied and commutative is also not satisfied. Next, whole number associative. Next, कॉपी में लिखो जल्दी से बैठ के। थर्ड प्रॉपर्टी, whole number subtraction is not associative. That is, let us suppose if we have given 3 number A, B, C, then A minus B minus of C not equals to A minus of B minus C. So whole number subtraction is not associative. For example, A is equals to 2, B is equals to 3 and C is equals to 4. Then 2 minus 3 minus 4 not equals to 2 minus of 3 minus 4. See, 2 minus 3 is -1 minus 4 not equals to 2 minus of 3 minus 4, that is -1. Now see, -1 of -4 not equals to minus of -1 will be +1. So -5 is not equals to +3. So whole number subtraction is not associative. So this was about the properties of whole number subtraction. So today we discuss about natural number, whole number and the basic 2 operations on whole number, that is properties of addition of whole number and the properties of subtraction of whole number. Now we discuss some application part. So applications on addition and subtraction of whole number. So let us see some examples. Find, or first question, find or evaluate what is the value of 5 plus 9. First whole number is 5, second is 9. 5 plus 9 किसके बराबर होगा? 14. Then one whole number है 495. अगर इसमें से मुझे 0 सब्ट्रैक्ट करना है, 0 को किसी भी नंबर में ऐड किया जाए या किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया जाए, उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा. So 495 minus 0 will be equals to 495. Next, what is the value of 7 plus 4 plus of 9? 3 नंबर का एडिशन कैसे करेंगे? फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ दीज टू. 7 plus 4 कितना होगा? 11 plus 9. Now 11 plus 9 कितना होगा? 20. So this way we can find the sum of 3 whole number.